will send one more practice sheet for exponents. So what do we understand by linear equations? First, let's do a little bit of algebra, I think. We'll do a little bit. Algebra is more fun. Algebra is more fun, so we'll do a Yeah, plus we're doing it in school. Sir, वो same ही होते linear equation और algebra? Yeah, linear equations is a part of it. So by algebra, I meant a little bit of we can do algebraic expressions. We are doing algebra in school. One second. Literal numbers are the letters which are used to represent a number. The literal numbers are also known as literals. Literal numbers obey all the rules of addition, subtraction, multiplication, division of numbers. Thus, A plus B means B is added to A. A minus B means B is subtracted from A. A multiplied by B means A is multiplied by B. A divided by B means A is divided by B. So everyone understood this? Yes, sir. So Pritish, read this slide. Literal numbers, for example, 5 into A or 5 dot A can be represented as 5A. 10 into P can be written as 10 dot P or 10 P dot. A into B can be written as A dot B or AB. 2 into What A. is the meaning of dot? Dot or multiplication are the same thing. You write without dot, you write with dot, you write with multiply sign, everything means the same. 2 into A into B can be written as 2 dot A dot B or 2AB. 10 into I into K into L into M can be written as 10 dot I dot K dot L dot M or 10 IKLM. 1000 into X can be written as 1000 dot X or 1000X, but dot or X must never be omitted between the digits. Thus, 3 into 5 can be written as 3.5, but 3 into 5 or 3.5 can never be written as 3.5 dot. So what it means that we cannot omit the dot or multiply sign with the numbers, but we can omit them with the literals or variables. Literals can also be called as variables. Also, omitted क्या होता है? Omitted मतलब छोड़ सकते हैं. Okay. So next slide, Viru, please read. A fixed value in algebra, a constant is a number on its own, or sometimes a. Let us suggest. Oh bhai, Viru bhai, you have to read for everyone. मैं सबके लिए पढ़ रहा हूँ. सबके लिए पढ़ रहे हो? अच्छा, आराम से बेटा, स्ट्रेस देके अच्छे से पढ़ो, रीड करो. Okay, sir. A fixed value in algebra, a constant is a number on its own, or sometimes a letter such as A, B, C to stand for a fixed number. Example, in x plus 5 is equal to 9. 5 and 9 are constants. Very well read. Please give a big hand for Viranj. Reading skills हो तो Viranj जैसी हो. Great going, great going. All right. So Amira, please read. A symbol for a number we don't know yet. It is usually a letter like X or Y.
Example, in x plus 2 equals 6, x is a variable. Why variable? When it may have just one value. In the case of x plus 2 equals 6, we can solve it to find that x equals 4. But in something like y equals x plus 2, a linear equation, x can have many values. In general, it is much easier to call it a variable, even though in some cases it is a single value. So Amira beta, how like you should learn some reading skills from Viransh beta. What is this? Did you see Viransh how well he read? सर So विराज Yes, ने sir. इंग्लिश में टॉप किया था. yeah. Yeah. So X, thankfully, the like in the test they didn't have marks for reading, right? So anyway, so X is called a variable. X and Y are called variables. Variables generally mean जिनकी many values हो, but अगर एक value भी होती है, like the linear equations which you guys are going to do in this grade, still we call them variables only. So next will be read by Mikey. Like terms are terms whose variables and their exponents such as 2 into x to the power 2 are the same. In other words, terms that are like each other. Note the coefficient, the numbers you multiply by, such as 5 and 5x, can be different. Example, 7x, x minus 2x are like terms because the variables are all x. Example, 1 by 3 xy to the power 2 minus So you 2 can say xy square बेटा, power is 2 तो हम square बोल देते हैं. xy square 6 xy square by 2 are all like terms because the variables are all xy square. So why is like variables important? Because we can add or subtract them. Multiply, divide तो हम किसी को भी कर सकते हैं, but add or subtract we can do only for like terms. So next, Polki. Yes, sir. Unlike terms. If they are not like terms, they are called unlike terms. Example, there are unlike terms because the variables and or their exponents are different. 2x, 2x square, 2y, 2xy are all unlike. They are not like. Sir, but can't 2x? सर मैं 2x का स्क्वायर को हम स्क्वायर को सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा? That 2x into 2x is equal to 4x. बेटा 2x into 2x equal to 4x square. 4x स्क्वायर कैसे हो गया? 2 into 2 4 हो गया, x into x x square हो गया. सर पर नहीं समझ आया? सर आ गया समझ. ठीक है. नेक्स्ट इट विल बी रेड. पोल की थोड़ा सा और रीड कर लो यहाँ. Yes, sir. Combining like terms. You can add like terms together to make one term. Example, 7x plus x. They are both like terms, so you can just add them. 7x plus x is equal to 8x. By the way, why don't we write 1x? It is simpler to write x and is so common that 1x looks strange. Okay, thank you, Polki. Next, Dheeraj, your chance. Example, 4x plus 3, 4x to the 4x power cube. 4x cube 4x cube plus 3x square minus 7 minus x cube plus 2. Some of minus these x square plus 2. This is square. minus x square plus 2. Some of the terms are like terms. Combine the like terms. 4x cube plus 3x square minus x Plus 2 minus 7. So what we are going to do? We are going to combine the like term. So 4x cube की तो कोई like term है नहीं. So it is alone, तो वो 4x cube ही रहेगा. But 3x square minus x square are like terms. So 3x square minus x square is going to become 2x square. Then 2 minus 7 is going to become minus. All right. Sorry, sir, I disconnected. It's okay. All right. Understood. So we Yes. can combine the like terms and add them. Can I read So another page?
No. So Adit, your chance. Yes, sir. Monomials. Monomials are the algebraic expressions with one term, hence the name monomial. In other words, it is an expression that contains any count of like terms. For example, 2x plus 5x plus 10x is a monomial because when we add like terms, it results in 17x. Furthermore, 40, 21, x square y, 9 pq, etc. are monomials because each of these expressions contains only one term. All right. So next term will be read by who is left, Mr. YY. Yes, sir. Binomials are the algebraic expressions with two unlike terms, hence the name binomial. For example, 3x plus 4x square is binomial since it contains two unlike terms, that is 3x and 4x square. Likewise, 10pq plus 13p square q is a binomial. All right. So we have understood monomial, binomial. Then third one, trinomial, Savera. Trinomial. Trinomials are the algebraic expressions with three unlike terms, hence the name trinomial. For example, 3x plus 5x square minus 6x cube is a trinomial. It is due to the presence of three unlike terms, namely 3x, 5x square, and 6x cube. Likewise, 12pq plus 4x square minus 10 is a trinomial. All right, we understood, guys. Sir, doubt. Yes. Sir, 3x plus 5x plus 6x, would it be a monomial or a trinomial? Monomial, beta, because you can add them. Okay, sir. Okay, यही उस स्लाइड पे भी दिया था. 1 second, और मेरे guys. को एक चीज नहीं समझ आई समझा, पूछ लो भाई, पूछ लो. और इसके अंदर अच्छा नहीं कुछ नहीं So, Yes. तो मतलब कि like terms को ऐड करना मोनोमियल कहते हैं. लाइक टर्म्स को ऐड करना मोनोमियल नहीं कहते बेटा. ऐड करने के बाद अगर केवल एक ही टर्म बचे एक ही टाइप की तो वो मोनोमियल होता है. ऐड करने के बाद दो टर्म्स बचे तो बाइनोमियल होगा. और हम सेम एक्सप्रेशन की टर्म्स को ऐड कर सकते हैं. सर सपोज आंसर आया 6y³ तो वो बाइनोमियल होएगा. सर हम 3x क्यूब प्लस 4x को ऐड कर सकते हैं. 3x³ प्लस 4x को हम नहीं ऐड कर सकते. ओके सर मेरे को एक डाउट है. या पूछो. सर सपोज आंसर आया फाइनल 6xy³ तो वो बाइनोमियल होगा या मोनोनोमियल. एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड. लेट मी स्टॉप शेयर. यस, पूछो क्या पूछ रहे हो आप. लेट मी राइट इट. सर सपोज आंसर हुए 6xy² तो वो बाइनोमियल होगा या बेटा मोनोमियल. मोनोमियल होगा बिकॉज ये वन टर्म है. मल्टीपल टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन. दैट ओके इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी अ मोनोमियल. तो अगर 4 terms है. कैसे 4 टर्म्स कैसे, जैसे मुझे बताओ, एग्जांपल दो, मैं आपको बताऊं. Like 6y square plus 7xy नहीं 6y स्क्वायर प्लस 7y cube 8y square और 7y क्यूब. 9x बेटा स्पीक स्लोली ना, आई कांट अंडरस्टैंड. 6y स्क्वायर प्लस 7y क्यूब, देन plus 8y plus 8x देन plus 9 देन बस. so more than 3 terms we can call it a polynomial. Basically all these are also polynomials, but we more than 3 terms का generally आपके कोर्स में पढ़ाते नहीं है. नहीं, जैसे 4 का होता है quadrinomial, but we generally we teach till trinomial only, and more than 3 terms
or one term or two term, everything is polynomial. So we just call them a polynomial. Yes. Sir? Yes. सर अगर जैसे 6y स्क्वायर ये जो लिखा है 7y क्यूब 8x प्लस 9x सर वो Yes. ट्राइनोमियल होएगा या फिर पॉलिनोमियल? ट्राइनोमियल होगा क्योंकि इसको जब सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट थ्री टर्म्स ओनली 6y square plus 7y cube plus 17x. So there are three terms. So this is trinomial. ओके All सर. right. ओके सर. Okay. So okay, please excuse me for a minute. Just for a minute. Okay. Then we'll resume. Exponents. So suppose I give you a question, 16a square b divide by 4ab. So what will happen? 16 will be divided by 4. So number part will be divided by the number part. I will get 4. Any confusion in this? No sir. Then a square will be divided by a. So I will do a2 minus 1. Property लगाएंगे exponent की. b I will do 1 minus 1. So final answer 4a. b to the power 0 1 ही होगा. So I will get my answer 4a. Understood this? but ये टर्म अनलाइक नहीं हुई. बेटा ये डिवाइड कर रहे हैं. डिवाइड और मल्टीप्लाई आप किसी भी टर्म को कर सकते हो. ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए केवल लाइक टर्म चाहिए होती है. ठीक है. लेट्स डू वन क्वेश्चन. I didn't understand. बेटा नंबर पार्ट को नंबर पार्ट से डिवाइड करो. 4 आ गया. दिस थिंग यू अंडरस्टूड. Yes sir. ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करो. केवल ए आ जाएगा. Yes अगर sir. आप ऐसे भी लिख लो जैसे 6a स्क्वायर बी अपॉन 4ab तो क्या होगा? बेटा एक सेकंड. बी भी कट जाएगा. यहाँ पे 4 आ गया. ए स्क्वायर अपॉन ए केवल ए बच गया. तो आंसर 4a हो गया. Yes sir. Yes, Viransh, what are you saying? और अगर 4a3b4 आया फिर डिवाइड करना है. क्या बेटा क्वेश्चन बताओ मुझे. सर 16a2b आप और डिवाइड डिवाइड बाय. सर 16a3b2 ab स्क्वायर इससे डिवाइड करना है. सर b स्क्वायर. हाँ गाइस जनरली ये आपके कोर्स में नहीं आना चाहिए. 16 डिवाइड बाय 16 1 हो जाएगा. सो दिस विल बी a टू b अपॉन a क्यूब b स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर -1 b टू द पावर -1 ये आ जाएगी. इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन ए बी. लिख सकते हो. यस सर. Don't worry, I'm not going to give such questions जहाँ पे power negative हो जाए. I'm going to give you questions जहाँ पे power negative ना. Easy, easy ओके questions. सर. Do it, guys. Sir, it should be in all exponential form. बेटा नंबर आप नंबर की फॉर्म में दे दो. Rest you can give it in exponential form. All right, Mr. YY, answer is correct. So Viru, if you miss a class, are you seeing the recording? पिछले की तो देखी है. पिछले जो सारी हैं. Okay, so the answer is 2b square c. Next question.
All right, Potter. Fine. Mr. YY from China. सर मैंने ना पूरा आंसर नहीं भेजा, मैंने ओनली पार्ट ऑफ आंसर भेजा. Okay. सर y का y 1 हो जाएगा. बेटा y 1 minus 1 y 0 हो जाएगा. y 0 हो गया मतलब 1 हो गया केवल. So y and y will get cancel out. कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा बस. 1 को आपको there is no need for you to write. So many crosses. So 15 divided by minus 5 will give you minus 3. कोई confusion इसमें? नहीं. So x cube divided by x square will give you x. कोई confusion इसमें? नहीं. Y and y will get cancel out. Z square divided by z will give you z. So minus. तो कैंसिल हो जाएगा. हाँ बेटा cancel हो जाएगा ना. अच्छा. X cube yz square upon minus 5x square yz. It means the same thing. Z से एक पावर कैंसिल हो गई, x स्क्वायर से केवल x बचा. y कैंसिल हो गया, -5 से -3 आ गया. ठीक है. Okay. So Mr. YY Viru understood. Mr. YY. Mr. YY from Yes, sir. China. Yes, sir. Calling Mr. YY from China. Sir, understood. Beta, you have to hurry up. Dheeraj. You need to write an extension form. You can write in any form. आप नंबर को नंबर फॉर्म में लिख दो, एक्सपोनेंट्स को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दो. सर मतलब हमें 3.5 टाइम मल्टीप्लाई करने. Yes बेटा, yes. So remember this property, ab whole to the power m is equal to a to the power m times b to the power m. Also remember this property, a to the power m whole to the power n is equal to a to the power mn. This is also exponents only. All this is a part of exponents only. We need to do a little bit more. But ये अजीब क्वेश्चन है. Dheeraj and Polki will get a star. And Savera. All right, guys. So this and Preeti. So this can be written as 3 to the power 5, x to the power 10, y to the power 15. नहीं समझ में आया कुछ पूछो guys. This 5 will get transferred to everything. सर मैंने यही लिखा, मेरे सर मैम ने मुगल दिमाग कर रहा है. इसका पावर थोड़ा ना होगा. सर मैंने यही सेम लिखा है. 243x to the power 10, y to the power 15. मैंने बोला था नंबर को आप नंबर फॉर्म में दे दो. सर पर सर Yes, 1 second. Yes, अभियान. तो 3 का पावर थोड़ा ना होगा.
3 का पावर क्यों नहीं होगा बेटा? Is it ये भी तो इस फॉर्मूले में आ रहा है ना। जैसे ये है a, तो m क्या हो गया, a पे भी चला गया, b पे भी चला गया, तो 3 पे भी जाएगा, x पे भी जाएगा, x स्क्वायर पे भी जाएगा, y क्यूब पे भी जाएगा। When it goes to 3 केवल 5 बनेगा, x स्क्वायर पे जाएगा 2 into 5 10 बनेगा, y पे जाएगा, y क्यूब पे जाएगा, y 3 into 5 y 15 बनेगा। तो हमें 243 लिखना था या 3 to the power 5? 43 पहले बोला था, नंबर को आप सिंप्लीफाई करो। अच्छा लिख दो। सो मैंने करेक्ट आंसर दिया, बट मैंने वो सिंपलीफाई करो फिर। ब्रेक दे दो। व्हाट इज अ ब्रेक? फिर 5 क्यों मिनट के चाहिए? लिए। अभी तो पढ़ाई की है, अभी तो स्टार्ट किया है। फिर 8 समझ गए। 5 मिनट्स पहले स्टार्ट हुई है क्लास, पहले अरे लेट आधे बच्चे घंटे लेट पहले ज्वाइन हुई हुई है। करते हैं, बच्चे अरे लेट लेट ज्वाइन कब करते ज्वाइन करा? हैं। सवेर ने किया था, पूछो सवीर से। अरे वो हर बार ही करता है। सो दिस वन, इसमें आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे सकते हो नंबर। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? नहीं समझ आ गया। दिस इज 5 and 5। ये -25 to स्क्वायर है ना? -25 नहीं है, -2s, s है। दिस इज s, s square t, st square s square t whole to the power 5 times 5ht square whole to the power 5। फिर हम नंबर फॉर्म में देना या नॉर्मल भी दे सकता? नंबर को आप एक्सपोनेंट फॉर्म में दे, नॉर्मल भी दे सकते हो, नंबर फॉर्म में भी दे सकते हो, कैसे मर्जी दे। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा नंबर फॉर्म में इजीली देने की। सर मुझे समझ नहीं आया, हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उनकी पावर्स का? बेटा यू हैव टू वर्क इट आउट। So remember, a to the power m times b to the power m will become ab whole to the power m। तो जब पावर सेम हो तो मतलब ऐड होती है पावर्स या फिर मल्टीप्लाई? पावर सेम हो तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन। बेसिस अगर डिवाइड में हो तो डिवाइड द बेसिस। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 और -2 को, तो फिर 5 + 5 को करेंगे, तो फिर 5 + 5 के बाद जो 10 पावर होगी उससे -5 निकालेंगे दूसरी से। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। मैं नंबर पार्ट सॉल्व कर दूं क्या? शुड आई सॉल्व द नंबर पार्ट? नो सर, आपने t की जगह यू सेंड मी y। that was a typing error. T and Y are consecutive alphabets on the keyboard. तो मुझे आ नहीं रहे क्वेश्चन। थोड़ी सी हेल्प मेरे को भी सर, मेरे को भी। तो सनी, मिस्टर वाई, सवेरा, वीरू, पोलकी। Can you make this a star question? So this is will be -2 raised to the power सर 5, s दिया। raised to the power 10, and t raised to the power 5. This can be written as 5 raised to the power 5, s raised to the power 10, s raised to the power 5, and this is 5, this is s, and t raised to the power 10. So is this clear? Saveer, Sunny, Polki, Amy, is this step clear? Yes sir. केवल मैंने पावर्स यस ट्रांसफर। नाउ इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ यूजिंग दिस। सो आई विल गेट -10 raised to the power 5। ये समझ आया? Yes sir. एमी ये समझ आया? यस सर। This was a number, this was a तो number। मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। So then S10 into S5, S15, T5 into T10, T15।
Understood, not understood, guys? Yes, sir. So can't we write it as st to the power 15? st to the power 15 लिखना है तो bracket लगाओ. But generally we write it in this way only. This is also correct. This is also not wrong, but this is more simplified version. तो ब्रेक दे दो Why? और रेस्ट करने के लिए और दे दो सर तो आज वो मैं फिर 2.5 मिनट्स लेट हुआ था तो 3 minutes? Sir, please, sir. बैटिंग को देखने के लिए 2 मिनट ही दे दो. Sir, please, sir, 4 minutes break. Please, sir. Sir, please. Thank you, sir. Excuse me, sir. Yes, Lilwani. Sir, I have to go somewhere. I have to leave 15 minutes early. Can I leave? Okay, better. Fine. Do this question, guys. So I gave. Did I give this one? No. No, sir. Sir. Yeah, no, I'm not giving. No. Is it xy to the power 2 or is it xy to the power 2? It is xy square whole to the power 3 times minus 5x cubed y whole to the power 3. तो Yes. हम xy स्क्वायर को 1xy स्क्वायर लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं, but लिखना क्यों है? और क्योंकि -5 के लिए Yes, बेटा. We can treat the coefficient. इसको बोलते हैं कोफिशिएंट. जो भी आता है ना पहले, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं. xy स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है. तो फिर टू दी पावर 1 ही रहेगा या फिर 3 होएगा? 1 to the power 3 क्या होगा, आप मुझे बताओ. नहीं, अगर हम 1 लगाएंगे तो फिर 1 1 का to the power 3 तो बेटा 1 का क्यूब क्या होता है? 1 into 1 into 1 क्या होता है, आप मुझे बताओ. बट फिर पावर्स तो ऐड होंगी ना, तो 3 + 3 6 आएगा. नहीं, बेटा 1 to the power 3 is 1 only. 1 cube is 1 only. -5 के साथ भी तो 3 आएगा. पर -5 जो 3 करोगे that is -125. -5 whole cube is -125. तो ये बिना डिफरेंस तो ये पावर ऐड होंगी तो फिर आंसर -5 टू दी पावर 6 ऐड आएगा. क्यों होगा बेटा? ये Sir, बेसिस अलग अलग है तो हम ऐड नहीं करेंगे. हम मल्टी यू अंडरस्टैंड, ये बेस अलग अलग है. 1 to the power आप 100 लिख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा. 1 to the power into x to the power 5 है तो x to the power 105 थोड़ी हो जाएगा. ये बेस अलग अलग है. राइट अव्यान? excuse me, sir. I wanted to Yes. ask, sir. Yes, I Dheeraj. -5x into x will be equal to what? Let me -5x into x is -5x. You cannot simplify more. So this 3 will be transferred to x, so it will become x cube y 6. कोई problem Polki Viru? Any problem in this? Times -5 whole Sir, I cube got the answer. I got the answer. times x to the power 9 times y cube. कोई problem?
So I did it right then and I sent ma'am the. Then this will become minus 125 times x to the power 12 times y to the power 9. बस पे न्यूमेरिकल फॉर्म में करना है कर दिया करो बेटा, सिंप्लीफाई हो जाता है. All right, everyone understood? यस सर Viru, Savira, Dheeraj. Yes, sir. Now let's do बच्चा question. One बच्चा question कर लो. चलो guys, 1 minute. Do this बच्चा question. सर वो -2 ऐसे कि -2 5 S है बेटा, S. 5 अगर मुझे लिखना होगा तो मैं मल्टीप्लाई का साइन दूंगा. Dheeraj, why are you not sending to ma'am? And your answer is wrong. Sorry. You got the बच्चा question wrong, Dheeraj. वीरू, पोलकी, सनी, प्रीति. सर मैंने भेज दिया. भेज दिया. So sent. All right, Polki. So Sir, look can here. you leave? This will be okay. This will become -2 whole cube, which is -8 S6 T cube. क्या problem है Mr. YY and Dheeraj? Mr. YY, what was the problem? Mr. YY. सर Guys, मैंने नंबर को प्लस करने के बजाय guys, can anyone ask in Mandarin? सर चिंग चोंग चिंग चोंग चिंग चोंग. All right, guys, do it. Chichi chong chong choo choo. Sir, Yes, Sarah. sorry. Yes, Sarah. Who is Sarah? Sir, is this cube for both the A and the B? बेटा अगर दोनों A and B पे क्यूब होता ना ब्रैकेट्स होती. Have I used brackets? No, sir. No. So the cube is only with A. सर Yes. यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 5 + 1 करेंगे या नहीं? नहीं बेटा, मल्टीप्लाई है. 5 into 1 करेंगे और करने की जरूरत ही नहीं है. कुछ नहीं है, मतलब 5 ही रहेगा. 5 अगर आप कोफिशिएंट 1 भी मान लो तो 5 into 5 5 ही होगा. ऐड में करेंगे हम. We don't eat your t-shirt. Oh, such an easy question. Such an easy question. Sir, can you end the class a little? 5 cube by सर मुझे times स्टार दे दो. a to the power, ma'am, please give star, ma'am, times b8. So this will be 5a to the power 7 upon b9. B to the सर power. मैं यार हैंडराइटिंग इतनी गंदी है कि मैंने 9 को 3 समझ लिया. मैं 8 को 3 समझ सारा लिया. कुछ सही कर दिया मैं. लिटरली मैं हैशटैग नहीं स्लैश लगाना भूल गया. And I forgot Guys, to. what was the problem in this question? Well,
There was seven all of them. correct, but the part where we had to multiply, we had to add 1 and 9, I forgot to do that. सर 7 के जो ऊपर वाली डंडे होती है ना, वो मैंने थोड़ा दूर लिख दी तो लग रहा था -1 है, तो मैंने -1 टाइप कर दिया. तो मैंने सिर्फ 2 into 4 कर दिया, 4 into a नहीं किया. What was the question? GHI. Wait. Are these questions interesting? No, sir. नहीं पकड़ा रहे हो आप इन क्वेश्चन से, बहुत गंदे क्वेश्चन है. कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. केवल आपको प्लस माइनस करना. यार केवल तो नहीं. Just- 8 को है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, करके करना है, या फिर सिर्फ नॉर्मली कर सकते हैं. और ऐसे कर भी कर नहीं सकते सकते, ये क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं. सर दिस क्वेश्चन इज इम्पॉसिबल. कितना इजी क्वेश्चन है गाइस, कितना सर इजी कहाँ क्वेश्चन. पे है, आप हमेशा बोलते हो ऐसा. तो रिमेम्बर व्हेन वी मल्टीप्लाई वी डू रेसिप्रोकल, बस उतना कर देना. माइनस में आप माइनस लाइक नेगेटिव वाली पावर नहीं दोगे. बेटा नेगेटिव वाली पावर नहीं आएगी. ओके आप डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज करोगे, यू विल डू द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर. सर वो करने की जरूरत है, मल्टीप्लाई सीधा माइनस नहीं कर सकते. माइनस भी कर सकते हो. सर एक्सपोनेंट्स की लॉज लगा के. रेसिप्रोकल होगा क्या आप बोल रहे थे जो? यस, माइनस भी कर सकते हो गाइस. बट फिर माइनस में नहीं आ जाएगा वो डिनोमिनेटर की पावर. यस, इफ यू डू विदाउट. माइनस में लिख दूं. No, don't give your answer with a negative exponent. Exponent should always be सर positive. थोड़ा सा और टाइम ले सकते हो. Yes. ठीक है. I'll give more time. आप डायरेक्ट करोगे तो नेगेटिव में पावर आएगी, डायरेक्ट नहीं करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो नेगेटिव में पावर नहीं आएगी. तो नेगेटिव में दे दूं पावर. No बेटा, powers need to be positive. खुशी मुझे क्यों हो रही है, क्योंकि इस सबीर टीवी देख रहे हो? सर मैंने तो बोला भी नहीं. फिर हु? सब प्रतिष्ठा, सब प्रतिष्ठा. सर हाँ टीटू प्रतिष्ठा. था, विराट था. सर मैं तो कुछ नहीं देख रहा. तो मैं आपको समझ स्क्रीन को. प्रीतिश बेटा, यू आर वॉचिंग टीवी? सर मेरे रूम में टीवी ही नहीं है. नहीं, आपने लैपटॉप पे चलाया होगा. सर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ क्वेश्चन अभी. समझ आ नहीं रहा क्वेश्चन. अरे करना कैसे है माइनस के बिना. Let me explain then. सर प्लीज एक्सप्लेन. So this becomes 2 to the power 4, which is 16, p to the power 8 upon q to the power 12. Divide by 8, or I can directly do multiply. Multiply by सर why does it change to 16p? q to the power 6. What are you saying? मेरे को भी नहीं समझ आया 16p का सवाल. 2 to the power 4 is 16 na? ओह 2 to the power 4 is 16, that is why. नॉर्मल जो उसमें लिख दो पावर में. Yeah. So 8 2s are. So you will give 2 p to the power 5. यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है. q to the power 4. यहाँ पे 12 है, यहाँ 16 है.
क्या प्रॉब्लम थी? The 12. Simple addition, multiply, that's it. So Yes. the power में The answer come with the division sign or a fraction line. बेटा आंसर कहाँ आया? फ्रैक्शन में भी नहीं आया, डिवीजन में भी नहीं आया, कुछ नहीं आया. मैंने 2 मेरा- to the power 4 लिखा था. 2 to the power 4 लिखोगे तो 8 will be 2 to the power 3. 2 to the power 4 divide by 2 to the power 3 will be 2 only. Sir, can I go to watch the room? No beta, I gave a break for that. The 8 2 to the power. Oh, okay. All right, understood? Yes, sir. All right, if I give you numbers like this, so what is the numerical coefficient in this? -7. -7. Numerical coefficient will be -7. कोफिशिएंट का मतलब है Means जो भी variable के, so other than variable, whatever is the number is the numerical coefficient. All right. -6 yz means -6 will be the numerical coefficient. 2ab square c. सर कुछ So वेरिएबल कोफिशिएंट होता है So numerical variable का coefficient भी होता है. Yes. सर तो इसके अंदर ए बी स्क्वायर सी होगा अगर वेरिएबल को कोफिशिएंट नहीं, variable coefficient ऐसे नहीं आता. They can give the find the coefficient of a. So the coefficient of a that I will teach you. 1 second. All right. So next concept is monomial binomial. So you have to identify the monomials or binomial. Let me open from Kindle only. Kindling जो See guys, I'll be opening a grade 6 book as per my promise. I told you we are in grade 6, we are doing grade 6. So I'll be opening that only. See. Can you see that guys? और 7th to 8th खोली है देख लिया मैंने अरे बेटा ऐसे देखो देखो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. Read it. देख पर लो. क्योंकि से पता नहीं What? अरे पहली बार करवा रहा 6th वरना 7th की करवा रही हूँ नहीं बेटा मैं 6th का करा रहा हूँ. Ask anyone. Amira, I'm teaching of 6th grade now. Yes, sir. So you have to write for ABC. You have to write if it's a monomial, write M. If it's a binomial, write B. If it's a trinomial, write T. If it's a polynomial, write T. केवल M, B, T और P लिख के आपको send करना है for the first 3 questions. See, this is grade 6, guys. I have been telling you since long. Sir, what about only one? Okay. All right, guys. So this is a monomial. This is a trinomial and this is also a monomial. So please give for 4th, 5th, 6th. Sir, how is that a monomial? Monomial because ये multiply में है. This is only one term. तो ये monomial हुआ.
ट्राइनोमियल कैसे? क्या? ट्राइनोमियल कैसे? ट्राइनोमियल बिकॉज ये वन टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. Terms are separated by plus and minus sign. Oh. So give the answer for fourth, fifth, sixth. Then what is a polynomial? ये सब polynomials होते हैं, but for more than 3 we can write polynomial. All of these are polynomials only. So I will teach you which are not polynomials also. Sir, is the next question the last So question? this is a polynomial, this is a binomial, this is a monomial. So Amy understood? Because beta this is one term, कोई plus minus नहीं है. This whole is one term. Last question of the day, it's already 20. Understood, Amy? Yes, sir. All right. Now we have studied what are polynomials, but what is not a polynomial? Let's study that. Suppose I give you an expression जिसमें मेरा denominator में variable आ जाए. So if I get a variable in the denominator, then this is not a polynomial. Or a negative exponent denominator में आ जाए, or a negative exponent like सर तो this. क्या होएगा ये? सर ये बाइनोमियल नहीं है? बेटा अगर मेरा डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. जैसे ये आ गया, पावर इज नेगेटिव. अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, दिस विल बिकम y अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि रेसिप्रोकल कर देते हैं. रेसिप्रोकल में आ गया, सर तो आंसर नॉट अ नथिंग. पॉलिनोमियल. सर नथिंग. आई एम टेलिंग यू विच इज अ पॉलिनोमियल, विच इज नॉट अ तो नहीं पॉलिनोमियल. आंसर कैसे भेजेंगे आपको? जस्ट नॉट अ पॉलिनोमियल. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. एक ओ. कुछ आंसर भेजने की जरूरत ही नहीं है. नहीं लाइक Two- वो माइनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइमोनियल. जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो कुछ नहीं है बेटा. ओके. So one by one, guys. So Mikey, is it a polynomial? Yes or no? नो सर. No. सर कैसे है ये तो होना चाहिए. This is, what did you say? सर इसका तो Beta, होना this is a polynomial. This is a binomial and a polynomial. इसमें तो पावर नेगेटिव नहीं है. राइट माइकी? सर कैसे? कैसे बेटा, कहाँ है पावर नेगेटिव, आप मुझे बताओ. सर आपने कहा था लाइक डिनोमिनेटर में हो तो. डिनोमिनेटर में वेरिएबल आना चाहिए. 3 आ सकता है, नंबर आ सकता है, वेरिएबल नहीं आ सकता. ओके. So second one, is it a polynomial? Yes or no? Yes, sir. So polynomial. Yes. So No. is it a polynomial? नो सर. No, sir. No. All right, guys, that's all for today. Rest we'll study in the next class. Bye sir, thank you. Bye bye. Hi, sir. Thank you, बाय sir. सर, थैंक यू सर. Bye, guys. Bye.